welcome back to Sarah's Tales. Today's video, we are going to make a special chicken recipe for you guys. Last year भी हमने chicken recipe बनाया था, तो I hope that इस साल भी अपने चिकन रेसिपी के साथ हम वापस आए हैं और ये एक स्नैक्स रेसिपी है. सो लास्ट टाइम हमने बनाया था चिकन कटलेट, इस बार बनाएंगे हम लोग चिकन पॉप्स और चिकन नगेट्स बोल सकते हो, चिकन बॉल्स बोल सकते हो, कुछ भी आप नाम दे सकते हो क्योंकि उसको बनना तो राउंड शेप में ही है, तो यू कैन गिव इट एनी नेम. सो बेसिकली दिस रेसिपी इज डन बाय माई मॉम. तो मेरी मम्मी ने बनाया ये रेसिपी. थोड़ा इनोवेशन सब ऐड किया है, थोड़ा सा यूट्यूब से लिया है, हमने भी थोड़ा इनोवेट करके डाल दिया है. तो यार इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू वॉट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सारा's टेल्स. अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको शेयर करो इस क्रिसमस, और ये स्पेशल क्रिसमस स्नैक्स सबको खिलाओ. दैट्स ऑल, लेट्स गो. हियर वी हैव आवर चिकन. सो ये चिकन हमने मैरिनेट करके रखा है विद जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पेपर के साथ. सो अब हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, लेट्स स्टीम द चिकन और उसको मिक्स करना है हमारे ग्राइंडर के अंदर. सो लेट्स पुट दिस चिकन इनटू दिस पैन. So now we have kept our oil into the pan, and now we will deep fry the barista we are going to make of the onion. So basically our chicken has been grinded and been made into a paste so that it looks like this. So it's almost like a paste. I added some water to grind this chicken, and now I'll be adding this onion barista. So guys, now I'll be adding chili powder to this. So basically you can add 1 teaspoon of chili powder. Here my chili powder is very spicy, so if it is Kashmiri chili powder you can add 1 teaspoon. Now I'll be adding some chili flakes too. Chili flakes, oh sorry chili flakes बस इतना डाल रही हूँ, थोड़ा और डाल देता है. ओ यार हवा ठीक है. उसके बाद डालते हैं हमारे गरम मसाला. सो गरम मसाला आई हैव टेकन 1 टीस्पून. ओके, सो अब ये मसाला सारा हमने डाल दिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑल द मसालास. नाउ इट्स टाइम फॉर सम कोरिएंडर, क्योंकि इसकी स्मेल तो बहुत ही बढ़िया होती है यार, तो इसके बिना नहीं होगा हमारा डिश पूरा. सो वी हैव अ कोरिएंडर लीव्स हियर. सो नाउ वी विल बी एडिंग अ स्पेशल इंग्रेडिएंट, दैट इज अ ग्रेटेड चीज़. So guys, in the next process I will be dipping a bread inside water. I will be soaking the bread. अब इस ब्रेड को थोड़ा सा प्रेस करके एक्सेस वाटर निकाल के मैं इसमें डालने वाली हूँ अपने जो as I added into this, I'll add one more bread. I forgot to tell you that I would also add some salt according to your taste and my taste. तो नमक गया हमारे अंदर. मेक श्योर कि अब हमें मिक्स करने का टाइम आ चुका है.
guys, here we have our beaten egg, and so guys, here we have taken our chicken pops and making it into small balls, and then the master would be masterpiece. Oh yo, yes, in the egg batter we'll be putting, and then into this batter of breadcrumbs, and then finally in the plate. सो गाइस, हमारे डिलिशियस टेस्टी पॉप्स रेडी है यहाँ पे, चिकन पॉप्स. सो लेट्स ट्राई दिस. So fantastic, so yummy chicken pops. यार मजा आ गया. आपको अपना क्रिसमस को मजेदार बनाना है तो डेफिनेटली ट्राई दिस रेसिपी और मजा करो अपने क्रिसमस में यार. एंजॉय. मेरी क्रिसमस इन एडवांस.